Hello everyone. In this video, we'll talk about the electric field due to an infinite line charge. There's another method to find electric field due to an infinite line charge using Gauss's law, but we haven't discussed that. So we'll be using the fundamentals. That means we'll be using it. We'll be dealing with it using calculus. That means a bit of integration and all. When we talk about an infinite line charge, that means we're talking about a long, thin wire, which is very long that we don't know about the ends, that where they're ending. Or you can say that let it be a short wire only, but the point is so close that we can consider it as long, like relatively way longer than the point where we have to find out the field. So let's assume like this is an infinite long wire, and at a distance r naught from the wire we need to find out the electric field at some point. Oh, this time they have taken as d instead of p. So normally at some point d here we need to find out the electric field, which is at a distance r naught, and let's say how we are going to deal with this situation or with this problem. Let's imagine like this is the wire, this is the whole wire, and it is charged. For instance, we are assuming that the charge is positive, so it's a positive charge, and let's say at point P or D, as per this, we need to find out the field. So what do we do? As it is an infinite wire, infinite long wire, plus infinity to minus infinity down there, we assume a small segment. Again, let that segment be dl and let it has a charge dq. We try to find out the field at point D due to this dq charge or dl element at some point D, and then let's assume that that field be dE. So then this field will have two components. One will be dEx in the x direction, that is dE cos theta. Another will be dEy, which is in the y direction, that is dE sin theta. One more thing, that this result here dE cos theta, if you assume that this wire to be symmetric enough, that means that this is the central point, means we don't know about the center, like it's a long wire, so we can say that all the dy components will get cancelled out, so we don't have to find it out, it will come out to be 0. But in some cases there can be a finite wire with a point somewhere here which is not symmetrical, so in that case dy's y component will be there. So what we'll be doing, we'll be finding out both the expressions for both, and then whenever it is 0 it will automatically vanish to 0. Okay, so let's start with that. mm, this is the case. So what will be dE? First come over that. Let's say dE will be 1 over 4 pi epsilon naught charge dq divided by distance. This is r naught, this is L, so this I can say that under root r naught square plus L square. But it is better to solve the result in trigonometric format rather than algebraic format. So instead of that, I use this as a triangle and I use the result r is equals to r naught sec theta, because if you solve it, cos theta will come out to be as r naught by r, so r will come out to be as, or r naught will come out, no, r will come out to be r naught by cos theta, effectively r naught sec theta. So dq by r naught sec theta, that is the distance, ka whole square. This is dE. This will be the result for dE. And dq itself can be written as, like, if the whole wire has linear charge density lambda, so dq can be written as lambda dl. So this becomes 1 over 4 pi epsilon naught lambda dl over r naught square secant square theta. This is the case. Now again, if we need to find out the x component, that means all the x components of this electric field, and similarly all the y components. So d का एक component हो जाएगा dex, एक component हो जाएगा dey. Now if we find out if we try to find out just de in a better manner, because जो मेरे पास अभी result है उसमें मेरे पास एक वेरिएबल तो है dl, यानी कि लेंथ में जो हम वेरिएशन कर रहे हैं, और दूसरा वेरिएबल है थीटा, एंगल भी चेंज हो रहा है. तो या तो मुझे सारे टर्म्स को एल में लेके जाना पड़ेगा या सारे टर्म्स को थीटा में लेके आना पड़ेगा. तो थीटा में लेके आना थोड़ा ईजी है. लेट्स ट्राई टू डू दैट. 1 over 4 pi epsilon naught lambda over r naught square secant square theta. Let's try to change this dl. Okay, in this triangle I can say that tan theta
is nothing but L over R naught. So L will come out to be R naught tan theta. This is okay. And if L is coming out to be as R naught tan theta, so if L is R naught tan theta, then dl by d theta is going to be R naught secant square theta. If I take it the other way, dl comes out to be as R naught secant square theta d theta. So I can write it as R naught secant square theta d theta. And this makes it as one good thing that secant square cancels out. So I'm left with dE as 1 by 4 pi epsilon naught lambda d theta over R naught square. This makes the result quite easy. So lambda d theta over R naught square, this is the case. And but again, now I cannot directly integrate it because every dE for different theta, dE जो है वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे. जब मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ तो डी इधर आ रहा है, अगर मैं पॉइंट यहाँ लूँगा तो डी इस तरफ आएगा, अगर मैं पॉइंट और ऊपर लूँगा तो डी कहीं आएगा, पॉइंट नीचे लूँगा तो डी ऊपर आएगा. तो अलग अलग डायरेक्शन है, आई कैन नॉट इंटीग्रेट इट. लेकिन जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो तो सेम डायरेक्शन में होंगे. ऑल डी ई एक्स विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली एंड ऑल डी ई वाइज फॉर इंस्टेंस फॉर नाउ only it will be in this direction only. और फिर अगर वो नहीं होंगे तो automatically cancel out हो जाएंगे vectorially. Okay, so if we take dEx, if we need to find out dEx, we can say it as 1 over 4 pi epsilon naught, because dEx is nothing but dE cos theta as per this expression. 1 over 4 pi epsilon naught lambda cos theta d theta over R naught square. Everything gets cancelled out except means everything is a constant except cos theta d theta and cos theta. अभी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? तो ये अगर इन्फिनिटी जाता है तो एक वायर है जो कि लॉन्ग इनफ है, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है, अगर ये एंगल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो इट्स गोइंग टू बी पाई बाई 2. और फिर अगर ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, तो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस पाई बाई 2. सो द लिमिट विल शिफ्ट फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. Cos theta का integration is sin theta, so minus pi by 2 it's coming out to be as 2. Yeah, it will come out to be as 2. Okay, एक R naught भी cancel हो रहा है यहाँ पे, तो R naught square नहीं बचेगा, सिर्फ R naught होगा. So 1 over 4 pi epsilon naught lambda by R, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2. So it becomes lambda over 2 pi epsilon naught R naught. This is the electric field due to the x component. That means the x component of this thing will come out to be as lambda over 2 pi epsilon naught R naught. In the same way, when you calculate the dEy thing, dEy, so here if you see dEy is in the downward direction or whatever it is. So जो dEy होगा वो होगा dE sin theta. सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे sin theta d theta हो जाएगा, minus pi by 2 to pi by 2. So sin pi by 2, sin का integration is minus cos, and cos pi by 2 and cos minus pi by 2 both are 0. So effectively this will vanish to 0. As I was telling you कि infinite wire है तो symmetrically इस वाले part का corresponding यहाँ पे एक part होगा जो इसको cancel out कर देगा. तो electric field due to this will be only the x component, that is lambda by 2 pi epsilon naught R naught. तो इस वायर की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे जो फील्ड होगी, अगर लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है तो दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर नॉट. दिस इज द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर. अगर यही वायर फाइनाइट होती तो क्या होता? तो जो लिमिट है वो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 की जगह कुछ और हो जाती. मान लो कि ये वायर सेमी इनफाइनाइट होती. सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड नहीं पता है हमें, दूसरा एंड पता है. तो जो फ़र्क पड़ता है इस सिचुएशन में, जो यहाँ पे मैंने EY में या DEX में जो हमने लिमिट डाली है, दैट इज़ DEX में जो हमने लिमिट डाली है वो डाली थी cos थीटा d थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. इसकी जगह आ जाता 0 टू पाई बाई 2, और फिर ये 1 रह जाता, मतलब रिजल्ट आ जाता लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट. और सेम वे DEY जो होता वो भी आता लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ना कि 0. तो तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो फील्ड बनती है, एक इज DEX और दूसरा DEY, और जो नेट रिजल्ट है वो कुछ ऐसा होता इस तरफ, दैट इज अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर.
ओके, दिस वाज अबाउट लाइक सेमी इनफाइनाइट, जब मुझे वायर के एक एंड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा एंड मुझे नहीं पता ओपन है। अगर फाइनाइट होता तो दोनों एंगल पे मुझे लिमिट लगानी पड़ती, थीटा 1 टू थीटा 2, तो बस फ़र्क इतना पड़ता कि अब मैं लिमिट लगाता -θ2 टू +θ1, जैसे अभी मैंने लगाई थी -π/2 टू +π/2। सेम सिचुएशन, दिस इज द केस। इफ़ द वायर इज़ फाइनाइट इनफ, तो जब मुझे Ex निकालना होगा तो लैम्डा cos थीटा d थीटा 4πε0 -θ1 टू +θ2 -θ1 टू +θ2, और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा -θ1 टू +θ2। विल मूव इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। So this will be the result for Ex, for Ey. You don't have to mug it up. Um, if you मतलब if you practice it तो automatically आपको ध्यान रह जाएगा। आप इन रिजल्ट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। जब ये इनफाइनाइट वायर होगा तो θ1 θ2 दोनों π/2 हो जाएंगे, तो ये वैनिश आउट होके 2 बन जाएगा λ/2πε0r0, और फिर ये जैसे ही π/2 होंगे तो ये वैनिश आउट होके 0 हो जाएगा। So this is how we find out the electric field due to a long infinite straight conductor using calculus method and not using Gauss's law. And this is the more fundamental way of solving problems. You can solve any kind of problem with this. So if you like this video, please share it so that it can reach to more people. Till then, have a good day. In the next class, we will be discussing about, I think, electric dipole, and yeah, I'll try to cover up as many things as I can. Okay, thanks a lot for watching. Have a good day. Bye bye.